Hello and welcome. You're watching NewsX and I'm Megha Sharna. As we move towards the Ram Mandir consecration ceremony, the images of Ram Lalla's idol have been revealed depicting the 10 incarnations. We have Akshat joining us live from Lata Mangeshkar Chowk in Ayodhya. जो दीपक हमारे जल रहे हैं वो हमने दीपक जलवाए हैं 501 दीपक। जिसका एक मैसेज है क्लियर। Akshat joining me on the telecast. Akshat, what's the view, what the environment is, how are things going on the ground as we quickly reach the crescendo, which is 22nd January, the consecration, Pran Pratishtha ceremony? Ayodhya all geared up for the mega inauguration on January 22nd. I am coming to you live from Lata Mangeshkar Chowk, of course the iconic chowk, one of the most popular hotspot also for the people who are visiting Ayodhya, the holy city Ayodhya. Of course it's all decked up. You can see the dazzling lights which have illuminated the whole city. And before explaining the significance of the Lata Chowk, I have with me some people who are celebrating this as a festival, as an occasion. So sir, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम हिमांशु खुराना है और मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ एंड इट्स बीन 15 days आई एम हेयर इन अयोध्या। तो बेसिकली हम लोगों ने ये दीपोत्सव जो अयोध्या के लोगों के लिए और अयोध्या के लोगों के थ्रू हम लोग प्लान कर रहे थे 22 जनवरी को, जो समहाउ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से नहीं हो पा रहा है। हम लोग उसी को ही एक हमारी तरफ से 2 दिन 3 दिन पहले कर रहे हैं। और तो आप दीपोत्सव कर रहे हैं, कितने दिए लाइट कर रहे हैं? हमने 501 दीपक यहाँ लता मंगेशकर चौक पे लाइट किए हैं। और उसका एक बेसिक पर्पस है कि जो अयोध्या ये जो दीपक अगर आप देखेंगे तो बेसिकली हमने ये दीपक को अगर आप देखेंगे 5 दीपक का ये एक हैम्पर है जिसमें हम लोगों ने आर्टिस्टिक दिए जो यहाँ के लोकल कुम्हारों के द्वारा बनाए गए दिए हैं। अगर आप ये दिए देखेंगे तो हमको सिटीज़ में ये दिए देखने को नहीं मिलते हैं जो ट्रेडिशनल चौक से बनाए हुए हैं। खास सिग्निफिकेंस है। सबसे पहली बात यह है कि आर्टिस्टिक हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल चौक हैं वो कहीं ना कहीं चले गए हैं। इसका बेसिक मैसेजिंग ये है कि आज कहीं ना कहीं सिटी में हम लोग देखते नहीं है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बाहर से इंडस्ट्रीज आ रही है, लेकिन जो आज भी आर्टिस्ट हैं यहाँ पे जिन्होंने ट्रेडिशन को जिंदा रखा है उनके बिजनेसेस कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहे हैं इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जहाँ पे कुछ लोगों को ज़रूर इसका बेनिफिट मिल रहा है लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही तकलीफ वाला काम हो रहा है। तो हम लोकल बिजनेसेस, लोकल वुमेन को, लोकल लोगों को एम्पावर करने के लिए, लोकल कंटेंट क्रिएटर को एम्पावर करने के लिए इस स्टार्टअप के साथ आए हैं जिसका नाम है अनिलोम। ये कम्प्लीटली मेड इन अयोध्या स्टार्टअप है और हम लोगों ने अभी जो स्टार्ट किया है इसमें अयोध्या की मिट्टी के दीपक हैं जिसमें तेल है जो कि तेल सरसों के द्वारा दिया गया और लोकल मील से बनवाया हुआ ये तेल है। इसके अलावा ये मोमबत्ती है जिसको चैनपुरवा की औरतों ने बनाया है, गरीब औरतों ने 80 औरतों बना रही है, जिसकी बात मन की बात में प्रधानमंत्री ने भी उनके बारे में मेंशन किया था। इसके अलावा बत्ती है जिसको हम लोग साथ में दे रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ की औरतों ने दूध के साथ रोल करके हैंड रोलिंग बनाया है। कम्प्लीटली हैंडमेड है, कम्प्लीटली ट्रेडिशनल है और अयोध्या की मिट्टी इसके साथ है जहाँ पे लोगों का कहना है कि इसके कण कण में राम बसते हैं। तो हम इसी अयोध्या की मिट्टी को देश विदेश में लेके जाना चाह रहे हैं। So of course you heard about the Indianization also and giving boost to local artisans also. मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। पुष्पेंद्र तिवारी मेरा नाम है। तो सबसे पहले तो 22 जनवरी को बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, कई प्रक्रिया होंगी, तमाम रिचुअल्स होंगे, तो कितनी खुशी हो? देखिए बहुत आनंद है, मन बहुत हर्षोल्लास है। इस मन के आनंद के बारे में जब कहते हैं ना, बहुत देखिए, एक होता है आनंद, एक होता है परमानंद, एक होता है ब्रह्मानंद। तो मन में जब आनंद हो जाता है तो उस दृश्य को नहीं कहा जा सकता। अब तो इस धरती में स्वयं ब्रह्मानंद आ रहे हैं, इस अवध भूमि में पुनः ब्रह्मानंद अपने सुंदर मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। तो उन ब्रह्मानंद की आने की खुशी में जो ये मन आनंदित है उसके बारे में वर्णन ये मुखारबिंद कर ही नहीं सकते हैं। So of course you heard them, they are all very delighted. And perhaps they are celebrating this as I said earlier also as an occasion. Of course you can see scores of people here. Sir आप भी बताइए, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, कई रिचुअल्स होंगे, तो आप लोगों ने भी दिए वगैरह जलाए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ने दिए जलाए हैं, सभी लोगों ने दिए जलाए हैं। राम हमारे आराध्य भी हैं और जैसे कहते हैं ना, राम सृष्टा भी हैं और सृष्टि बहुत बढ़िया कुमार विश्वास जी ने कहा है।
तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा खुशी का पल है। हम लोग खुश हैं। आ जाओ बच्चों, आप लोग भी बताओ सब। तो पहली बार अयोध्या आ रहे हैं? नहीं, हम तो यहीं के हैं, लोकल ही हैं। यहीं के लोग। तो कितना बदलते हुए देखा है अयोध्या को? बिल्कुल बदल रहा है। मुझे लगता है हम लोग ने जीरो से आगे देखा है, क्योंकि यहाँ पे तो लोग बहुत कुछ था, जैसे रिस्ट्रिक्शन से पहले लोग आना नहीं चाहते थे बहुत सी। अब पहले दर्शन करने के लिए कितनी पाबंदियाँ थी, अब देखिए बिल्कुल ओपन हो रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोग, देश ही बदल रहा है। देश का जो नया रूप हम लोग देख रहे हैं वो अयोध्या से देख रहे हैं। So of course, they are saying, of course, that Ayodhya has seen a total makeover, a total overhaul ahead of the Pran Pratishtha ceremony. And of course, you can see, if I just pan my camera 360 degrees and give you a sense as to what the atmosphere is like here, because it's all religious fervor which has spread across the city. And here you can see how they are celebrating a mini Deep Utsav ahead of the mega ceremony, Pran Pratishtha ceremony, which is going to take place on January 22. And of course, the inauguration of Ram Temple. You can actually see, how the whole holy city Ayodhya has been painted into the divine color. And they are, of course, many people say that they are, of course, celebrating it like Diwali ahead of the Pran Pratishtha ceremony. And it's not just here at the Lata Mangeshkar Chowk. You just go anywhere, as far as our eyes can go. People are cladded in divine uniforms, and they are all chanting slogans of Jai Shri Ram, and perhaps they are all upbeat about the grand inauguration of the Ram Temple, because here is one such glimpse which you can see on your screens. And now very quickly, coming back to Lata Mangeshkar Chowk, of course you can see a mammoth veena also which has been installed over here. Of course, a 40 feet veena. It also weighs around 15 tons. So of course, this Lata Mangeshkar Chowk has been named after the iconic late melody queen Lata Mangeshkar, who has also works related to the Ramcharitmanas. And you can also see the 7 pillars. If we just pan our camera, the 7 pillars, ornated pillars of sandstones, which actually encircle this 40 feet veena, and add to the charm of this landmark. And there, of course, you can see on your screens the Surya Stambs, the pillars of Surya Stambs. Approximately 40 pillars, have been installed in Ayodhya, and they have been erected at several places, which intersect the Ram and the Dharm Path. And the significance of it, very popular. There is a popular belief that Lord Ram was a Suryavanshi. So in that belief only, in that wake only, Surya Stambs, these pillars have been erected at different places. And there is also a plan to develop Ayodhya as a solar city. Of course, a big boost is being given to solar plants also. So that thing is also being kept in mind. We'll just walk across and give you a sense as to how the city has got a makeover, how it is looking after a complete overhaul, because scores of people are coming here in numbers, and people are chanting slogans there. Of course, you can see how they are chanting slogans of Jai Shri Ram, and also keeping the influence of people in mind. Security arrangements have also been made, tight security arrangements in fact, because there will be a lot of VVIP movement ahead of the Pran Pratishtha ceremony in Ayodhya. So for that very reason, you can actually see, regularly these patrolling vehicles are here in the temple town roaming, just keeping a continuous vigil as to what's happening in the city, and to also evade or avert any kind of infiltration or suspicious activity. So a lot of security arrangements have been made. UPATS is there, CRPF is there, then RAF, Rapid Action Force, is also there on the ground to basically ensure that everything goes in a well coordinated manner. And of course, when we talk about the city, then again, we'll just pan our camera. Of course, you can see how people are rejoicing this moment, and many Swamis are also here
So we'll just ask them what's the significance, of the idol also, because the face of the idol has been revealed today. स्वामी जी, आज रामलला का जो मूर्ति है उसका जो फेस है वो दिखा दिया गया है, चेहरा दिखा दिया गया है, तो कितना ज़्यादा महत्व है और आगे क्या क्या प्रक्रिया रहने वाली है? आज जैसे भगवान का नगर भ्रमण करा करके उनके जो स्थायी जगह है उस पर उन्हें विराजमान करा दिया गया। तो आज के बाद अनादिवास, फुलादिवास आदि जो हमारी परंपराओं के शास्त्रीय विधि है उस तरह से आज से प्रारंभ हो गया भगवान का ये सारे कार्य। और फिर 22 तारीख को 21 को अभिषेक, 22 तारीख को नेत्र खुलेंगे। 22 को क्या रहेगा? उस दिन नेत्र खुलते हैं, भगवान का अंग न्यास कराया जाता है और दर्शनार्थ के लिए लोगों को भगवान उस दिन से फिर अपना दर्शन देना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये रिचुअल्स वगैरह हो रहे हैं, सारी प्रक्रिया जो है अभी हो रही है। और जैसे हम बात करते हैं, आपने कई प्रक्रियाओं के नाम बताए, तो अगर आसान भाषा में समझाना चाहें तो क्या क्या प्रक्रिया है इसमें? प्रथम में हमारी 9 ग्रहों की और षोडश मातृका पूजन का होता है, उसमें किया जाता है। आचार्यों के द्वारा उस जगह की पूजन होती है जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं। फिर 9 ग्रहों आदि की सभी जो हमारी 33 कोटि देवताएं हैं सभी को उनका भगवान के परिवार जो हैं उनके गणेश जी, शंकर जी आदि सभी का पूजन होते हुए जो मेन हमारे जो आराध्य होते हैं उन आराध्य के लिए पूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रथम में उन्हें जलादिवास, अनादिवास, फुलादिवास, फिर फलादिवास, फिर तमाम तरह की ये प्रक्रियाओं से शास्त्रीय विधि से गुजरते हुए जब हम लास्ट में अभिषेक होता है एक दिन पहले, जैसे 21 तारीख को किया जाएगा 108 घट, वो अपने शास्त्रीय विधि के अनुसार आचार्य जो होंगे वो निश्चित करते हैं। उसके पश्चात जो बृहस्पति अपना 22 तारीख जो होगा, 22 तारीख को भगवान का नेत्र खोलेंगे और उन्हें जो आचार्य होंगे भगवान को अंग न्यास वगैरह कराएंगे और सारा प्रक्रिया संपन्न करने के बाद महाआरती का जो आयोजन होता है जिसमें हमारे कुछ वरिष्ठ जो हमारे आचार्य हैं, महापुरुष हैं, वो गर्भगृह में रहेंगे और सुनने में आएगा मोदी जी भी रहेंगे। तो इन लोगों के द्वारा उन्हें आरती की जाएगी, भगवान की आरती होगी, महाआरती। उसके बाद जो दर्शनार्थ भगवान को खोल दिया जाएगा। उसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा का पूरा जो प्रक्रिया वो प्रक्रिया होने के बाद, पूरी प्रक्रिया के बाद फिर दर्शनार्थ के लिए भगवान सभी लोगों को मंगल करने के लिए दर्शन देना प्रारंभ कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमसे बात करने के लिए। So of course, you heard about the rituals also which are being performed on a regular basis. Of course, they started from January 16th and they will go on till January 22nd, the day when the Pran Pratishtha ceremony is going to take place, and of course the mega inauguration of the temple also. If we just show you perhaps there also, of course on my right side it's the banks of Saryu river, and there also people have gathered in numbers, these sculptures have also been made just to ensure that the whole city has been painted in divine color. You can actually see how they have made these sculptures, and one of the sculptures is currently also working on them. Of course, they highlight the life of Lord Rama and its impact on the people, the larger impact, and perhaps just to give you in a little perspective also, it also reflects the importance, the significance of the religious, these religious events, and the collective consciousness of the people when it comes to the significance of these religious events. If we just also talk about perhaps what the revelation of the face of the idol of Ramlalla means, then it carries various religious symbols also. If you just look at this sculpture also, then religious symbols include Om, Ganesh, Chakra, Shankh, Gada, Swastik, and even Kamal and Nayan. So these are also very religiously significant when we talk about the importance, and the religious sentiment which is being carried
along with the idol of Ram Lalla. And as we walk across the city, then it's all painted in religious fervor, and at many places these large screens also have been put so that there will be streaming of the ceremony also, so that people can actually watch it. And perhaps you can right now you can see a lot of traffic also on the roads, because it's the peak hour. People are just rejoicing this movement, and you can also see some of the people are also carrying flags. Some of the local residents, of course. Many people have also visited this holy city on cycles. Some have actually come on foot just to show their religious sentiment, which is associated with Lord Ram. And this is the whole Lata Mangeshkar Chowk, which you are seeing on your screens. It's all hustling, it's all bustling right now, in the evening. And perhaps it also shows how Ayodhya has changed over a period of time. It has transitioned from one of the neglected towns to being one of the most 21st century town. Also the holy town, which is coming up with a lot of facilities also now for its residents. So of course we'll continue to show visuals also, because several developmental projects are also underway in this city to accommodate lakhs of tourists. So that's also there. And of course we'll just also go there and try to speak to a few people out as to what they feel about this transformation. So of course here also you can see many of the Swamis standing, and this place has actually been adorned with a lot of fervor also. And if we just talk about the other aspect also, then anticipating the government has anticipated a huge influx of devotees, and for that very reason security arrangements have also been made. The rituals are of course being conducted, but there will be a lot of VVIP movement. Approximately 7,000 guests are being expected on that day to attend the Pran Pratishtha ceremony. So that is also being kept in mind, and all the security arrangements are being made. We'll just talk to one of the acharyas also about the significance of the Ram Lalla idol. So we'll understand the significance. So Acharya ji, आज जो है रामलला का जो मूर्ति है उसका चेहरा दिखा दिया गया है, कहीं ना कहीं लोगों में भी बहुत उत्साह है, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में बताइए। देखिए, ये राम जी का बाल स्वरूप जो देखा है हमने, और आपने देखा होगा कितनी मासूमियत है, कितनी निश्चलता है, और धर्मों में निश्चलता का बड़ा महत्व है। महावीर भी कहते हैं सोई उजुय भुजष्ट धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई। धर्म कहाँ ठहरता है? जो रिजु हो, जो पवित्र हो, जो निर्मल हो, और जो शिशु की तरह सरल हो। तो राम जी का मूर्ति जो है अपने आप के अंदर वो स्थापत्य कला है, वो हमारी संस्कृति है, वो हमारी धरोहर है, वो एकाग्रता की आलम्बन का सूत्र है। और आज उस मूर्ति का दर्शन करके कोटि कोटि लोग जो हैं वो भावविह्वल हैं। और अब तो 22 तारीख वो घड़ी आ गई है कि सदा सदा के लिए हम जो है उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद में उसका लाभ ले सकेंगे। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दिन होने वाला है, तो इतिहास में इसकी क्या महत्व होगा जब आगे इसकी बात होगी? देखिए, आज आप देख रहे हो अयोध्या जी में कितना उत्साह है, कितना उमंग है, हर चेहरे पर एक मुस्कान है, आंखों में एक चमक है, एक अलग प्रकार की ललक है। और ये केवल अयोध्या जी में नहीं, केवल भारत में ही नहीं, विश्व भर के अंदर अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर इस कार्यक्रम को जो है मनाने की तैयारियां हो रही है। लंदन पार्लियामेंट में कार्यक्रम हुआ है, अन्य अन्य देशों में हो रहा है, ग्लोबल लेवल पर, क्योंकि राम जी जो है किसी एक जाति के नहीं, एक धर्म के नहीं, एक संप्रदाय के नहीं, एक देश के नहीं। और भला महापुरुष तो सबके होते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की शीतलता, नदियों का जल, वृक्ष के फल, वो तो सबके होते हैं। तो राम जी सबके हैं और हम सब राम जी के हैं। तो आइए 22 तारीख को हम संकल्प करें
राम जी के गुणों को आत्मसात करें, अपने जीवन में उतारें, तभी राम राज्य की ओर हम आगे बढ़ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमसे बात करने के लिए. So of course, you heard about the significance also of the rituals being conducted, and also perhaps the one very important fact that how it's also being portrayed at an international level. Because in many countries this will be celebrated like a festival only, and even in US, as Acharya also talked about it, that it will be streamed on the live screens on one of the main hustling and bustling streets of New York. So that's also very important as to how the role of India is increasing on international level, and of course the religious significance also on the international level. So we'll continue to walk across the city and give you a glimpse as to how the city looks ahead of the mega temple inauguration ceremony and the Pran Pratishtha ceremony, which is going to take place on 22nd of January. Because in the background also we can hear traditional songs are being played, just to give in a sense the scale and diversity of this event. And of course people are really enthusiastic and excited about the scale and diversity of the event, and as far as our eyes can go, as I talked about this earlier also, you can see how people are rejoicing on the basically on the traditional musics which are being played, and this is actually radiating joy, auspiciousness and energy. And on 22nd January also, traditional music instruments from various regions and states across India will be played in front of the Lord Ram. So that's also being planned ahead of the mega ceremony which is going to take place. A lot of cultural music is going to be there, just to of course it will be showcasing the scale of the event, the large scale event which is taking place on 22nd January. Of course, today Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, also visited the holy city to take stock of the situation, because we'll just show you there, right there. There you can see, barricades are there across the whole city only. And like this, security arrangements have been tightened up. It has actually been beefed up, and even the Chief Minister himself took stock of the situation as to how arrangements are being made ahead of the mega ceremony. He also visited the Hanuman Gadi temple. He also visited the banks of Saryu river, and then he also took part in the puja ceremony. He offered his prayers, prayed for the well-being of the people of Ayodhya of Uttar Pradesh, and then he held a meeting with the top level officials to ensure that everything is streamlined ahead of the mega ceremony, and it is just carried forward in a well coordinated way. So CM himself is continuously visiting and taking stock of the situation ahead of the mega ceremony. But the one fact remains intact, that people are rejoicing this moment. They have been waiting for this moment for years now. That's what we hear in Ayodhya, and perhaps that sentiment is also echoing throughout the city, all across the city, and it's a dream come true for many people. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.